ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ 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 ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ 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 ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲੈਣਾ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ Jai Guru Ji. Jai Guru Ji. Sangat Ji, the schedule for the month of June remains the same. It's every Thursday 6 p.m. to 8 p.m. and every Sunday 4 p.m. to 6 p.m. July 2nd, Sunday, temple will remain closed for Guru Purnima preparations. Temple is open on July 3rd, Guru Purnima. It's a long weekend. On Monday, the schedule is 4 p.m. onwards. On July 6th, Thursday, temple will remain closed for Guruji's birthday preparations. On July 7th, Friday, temple is open from 6 p.m. onwards and the guest of honor is Sonia Arora Ji. So please plan your visit to temple accordingly. Also, July 9th, Sunday, temple will again remain closed. Apart from these days, the schedule for the month of July will remain the same. That is every Sunday 6 p.m. to 8 p.m. and every Thursday 6 p.m. to 8 p.m. and every Sunday 4 p.m. to 6 p.m.
Sangaji request again not to step on the mats. That is for the langar prasad to be kept. Please, please, please try to consume your langar prasad completely in temple itself. In case you are not able to consume it completely, please ask any of the sevadars and they will pack it for you. And request again the Sangat who would be sharing their satsangs, please keep it short for 5 minutes so that everyone gets an opportunity to share the satsangs. Thank you. जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। वैसे तो पेरेंट्स का कोई दिन नहीं होता, एवरी डे इज डेडिकेटेड टू आवर पेरेंट्स, बट क्योंकि आज फादर्स डे है, आई वुड लाइक टू शेयर वन सत्संग। माय फादर वाज डायग्नोस्ड विद लिवर कार्सिनोमा इन अगस्त 2020। वो नाभा में रहते हैं और डुगरी हर महीने जाना मॉम के साथ उन्होंने, मैं यहाँ पे थी कनाडा में, तो जैसे ही पता चला तो डीएमसी में ट्रीटमेंट चला, तो हर कीमो राउंड से पहले दे यूज्ड टू विजिट डुगरी टेम्पल, जो कि बंद था ड्यू टू कोविड, बट एवरी टाइम बिफोर एवरी राउंड दे यूज्ड टू विजिट, और बाहर से मत्था टेक के जाना और फिर आगे अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाना। बट आफ्टर 4 राउंड्स उनकी तबीयत डिटीरियोरेट होती रही। देन अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम इन February 2021। तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि गुरुजी आप तो सबकी लाइफ लाइन बढ़ा देते हो, व्हाई नॉट हिम? I regret it now, but during that whole stay in India, I did not visit any temple. वहाँ कहीं भी नहीं गई, जलंधर मंदिर नहीं गई, डुगरी टेम्पल नहीं गई. So I came back, but I feel that गुरुजी कहीं ना कहीं हमें फिर से कनेक्ट कर लेते हैं अपने साथ. He is so magnetic, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते. So जुलाई 22 में हमने आना शुरू किया इस मंदिर में, एंड सडनली आई डोंट नो सम कुछ तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, और गुरुजी तो है ही बहुत बड़े. इमीडिएट कनेक्शन आई फेल्ट कि वो सब कनेक्शन वापस आ रहा है. आना शुरू किया, एवरी संडे वी यूज्ड टू कम, लेकिन वो मन में जो क्वेश्चन था ना वो कहीं ना कहीं आता था. तो 3 to 4 months बैक एक संगत ने अपना सत्संग शेयर किया, हाउ दे ऑल्सो लॉस्ट देयर फादर, एंड गुरुजी उनकी सिस्टर के सपने में आते थे और हाउ ही एक्सप्लेन्ड हर एवरीथिंग. तो अराउंड 3 weeks बिफोर मैं घर पे सोफे पे बैठी हूँ एंड सडनली आई स्टार्ट क्राइंग, और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने फादर को. तो मैंने सोचा कि गुरुजी आपने उनको सपनों में आके दर्शन दिए और एक्सप्लेन किया, बट आई रियली फील कि आप मुझे सत्संग के थ्रू ही मुझे क्लोजर दोगे. और फ्राइडे को ये हुआ, और उसके संडे को जब हम मंदिर में आए, दैट डे वाज मदर्स डे, और उस दिन सभी संगत ने अपने फादर के रिलेटेड सत्संग शेयर किया, और एक आंटी ने तो कहा भी कि आज मदर्स डे है और फिर भी सब अपने फादर के बारे में सत्संग शेयर कर रहे हैं. और मैं वहाँ बैठी थी एंड आई कुड फील कि गुरुजी वाज लिसनिंग टू मी एट दैट टाइम, एंड ही इमीडिएटली आंसर्ड बाय शेयरिंग बाकी लोगों के सत्संग के थ्रू. ही इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड. और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो बाय चांस है. नेक्स्ट संडे ऑल्सो द सेम थिंग हैपेंड. नेक्स्ट संडे ऑल्सो लाइक विशाल अंकल ऑल्सो शेयर द सत्संग अबाउट हिज फादर, एंड एक बच्ची भी आई, उसने भी बोला कि गुरुजी इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड. दैट वाज इट. आई कुड फील इट. I could feel that yes, Guruji listens to us every time, and he also knows when is the right time हमें wisdom impart करने के लिए, when our mind is ready to accept it. Acceptance is very heavy word. Acceptance 100% नहीं आ सकती, but if he is there with us, he definitely takes care of us at the right time. So
Thank you so much, Guruji. Always, always शुक्राना. And thank you for blessing us. इतनी हमें समझ देने के लिए, अपने साथ कनेक्ट करने के लिए और यहाँ पे बुलाने के लिए. शुक्राना गुरुजी. Jai Guruji, my hands are literally trembling right now. This satsang has been long due. मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, बाहर जाते टाइम जो बड़े मंदिर की पिक्चर बनी हुई है, सॉरी माय बैड, मैं वो देख के हमेशा कहती थी कि गुरुजी मेरे को आप सत्संग दोगे, मेरे को आप सत्संग दोगे, एंड आई एम गोइंग टू कम बैक एवरी थर्सडे, एवरी संडे आई यूज्ड टू ट्राई टू कम हियर. एंड जब भी मैं जाती थी मैं वो देखती थी, माई आईज यूज्ड टू वेल अप अ लिटिल बिट की नथिंग सो फार, बट आई डिडंट नो सत्संग इन मेकिंग ही था. Almost 2 years ago, I got tenosynovitis, which is basically this part of both the wrists were like hurting real bad, and my X-rays and all didn't show anything positive. But I wasn't connected to Guruji as much as I am today. I mean, that's what I feel, which is why I couldn't move my hands, like putting my jeans on, tying my hair, washing my hair. Even washing my hands was a task for me, and I was an international student, so you can imagine the amount of difficulty I had to go through being by myself with no family here whatsoever. And anyway, that time went on, and for some reason, I mean, for a very good reason, I got closer to Guruji, got connected to Guruji because of my mother. And then only, I want to say, 2 months ago, I went to my doctor again. I was doing all of my physio treatments and everything. And she said, oh, we actually had to call you any which ways because the X-ray that we got from the clinic for the first time said that your hands are completely normal. Both the wrists are like completely fine. And I was like, what? Then why was I getting WSIB? Why was I getting, I mean, I didn't pay even $1 for like the treatment. So मेरे को government से मतलब क्यों ही help मिल रहा था फिर. But, and she was like, yeah, even we're perplexed. We don't know. And then, ठीक है, उस टाइम इतना कुछ समझ नहीं आया, बट मेरे रिस्ट में कभी एकदम से पेन हो जाती थी. यहाँ तो मैं आई रही थी, एंड दिस इज रियली अ मैजिकल प्लेस. आई वांट टू से ऑलमोस्ट अ मंथ अगो द फर्स्ट सेवा आई गॉट फ्रॉम दिस मंदिर वाज बेडशीट सेवा, एंड बिकॉज ऑफ द रिपेटिटिव मूवमेंट प्रेस करते टाइम जो होता है, आई वॉज कम्प्लीटली on a no for that. I was said, you don't have to do anything that is a repetitive movement, just avoid at all costs. Anyway, I still did it. मेरे को मेरे friends ने कहा, you can always go and get it done, but I was like, नहीं मैं खुद ही करूँगी. I did it, nothing happened. I came here, I still remember the entire satsang, I was only crying. मुझे लग रहा था कोई कहेगा इसको क्या ही हो गया है, रोई जा रही है तब से, but I could not stop my tears and I was just crying. उसके बाद से I started getting roti seva, and please, I don't want to come off as somebody who's, you know, being very proud about it or anything, but Sangaji, 200 rotis, 250 puris is a lot for somebody who could not even pick up the chakla belan at one point in time. So for me, even today, chahe map bane, chahe gold roti bane, that is another thing. But the fact that I'm being able to hold it, make it, belo it and everything is a big deal, and that is all because of Guruji. I owe him everything. The fact that I'm holding this mic with no problem, the fact I'm standing here, I tied my hair, put my clothes on by myself is a big deal, and that big deal is Guruji, and I have nothing but thank you, Shukrana, from the bottom of my heart. If your mother says no, that you have inculcated a lot of patience in you, that is a big deal, because parents को कभी लगता नहीं है कि बच्चों में patience आया है. But for me, when my mother started saying that, in my head I knew it is all because of Guruji, because I've always asked only and only for one thing, which is सबर दो, मुझे सबर दो, मुझे जितनी प्रॉब्लम देनी है दो, मुझे गड्ढे में गिरा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को टूटने मत देना और खुद से अलग मत होने देना. And that is what I keep saying every single time I am in a problem, and I feel like that is what connected me even more to him, and I'm only so thankful and grateful, and I do not want to remember the life before I met him or before he connected me to himself. That's it. Only Shukrana, thank you. As many times as I can say, that's about it. Thank you. Jai Guruji, Shukrana Guruji.
Since today is Father's Day, I just want to take a moment to say Happy Father's Day to all the fathers out here. And I want to talk about a little bit I want to talk a little bit about my own father. His name is Mohit. He is a really good father. He lives in India at the moment because of some visa issues. But he came to Canada in the winter to celebrate Christmas and my birthday with me. My birthday is in January. And he's just really a great dad. Whenever I come home from school and I meet him working in the bedroom, he just like gives me a big hug and buckload of love, I guess. And yeah, he's just a really great dad, and he loves me a lot. I love him too. He really made my Christmas a really nice day, and my birthday. So yeah, thank you, and happy Father's Day. You are a great daughter. I'm sure he is very proud of you. Jai Guruji. Jai Guruji, Shukana Guruji. So I'm really happy, and I just want to say a moment to also say Happy Father's Day to all the wonderful fathers. So I would like to also talk about my dad a little. I'm really grateful for him. He's done a lot for me for the past 10 years. And he's always been there for me. He's always been happy for me. He was always at my tough times and my hard and my nice times. So I would just want to say that he's really nice and he's a really good father. You are a very good daughter too. जय गुरु जी संगत जी। मैं सभी संगत की तरफ से शुक्राना करना चाहूंगी गुरु जी का। आप मेरे पीछे रिपीट करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, गुरु जी को अच्छा लगेगा। आज फादर्स डे है तो जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, वी लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, हैप्पी फादर्स डे गुरु जी, सॉरी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरु जी, अपने सत्संग में बुलाने का शुक्राना गुरु जी, आई हुई संगत का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हैप्पी हैप्पी फादर्स डे गुरु जी, एंड वी आर सो लकी कि हम आपके बच्चे हैं गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। I would like to say Happy Father's Day to everybody here. I just want to say Guruji is the best father for me. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Jai Guruji, Shukrana Guruji, Happy Father's Day Maharaj. I want to share that last couple of days ago on Thursday, when I came in for Satsang, just hours before I was signing a huge contract with someone. That was a huge deal for me, financially. It was huge. So I wasn't sure what to do, and of course we have options of asking so many people and reading about them and doing so much, but when we have Maharaj, we don't need to ask anyone else. And I just came to Satsang and I said, Maharaj, if it's from you, let's go forward. If it's not from you, take it away from me. I don't want to ask for anything. It was a sweet deal, very sweet. And it was wonderful. It just looked wonderful, but there was something within that was not right. It just didn't feel right. So I said, and everyone was saying that I should go for it. I mean, I want to say the world was saying that, family was saying that I should go for it. Friends were saying that I should go for it.
But Maharaj, of course, speaks to us telepathically, and we just got to listen to that gut feeling. And so if we're not sure, we just got to ask him. And so I sat with him and I was like, if it's not from you, let me know. And so 9:40, I think it was 9:30 that I left the Mandir, and 9:45 while driving away, I have like an hour drive. I keep calling this gentleman because I need to get some information, and we had agreed that we can talk before 10 p.m. And he wasn't picking up. And finally his phone picks up, but he doesn't know that his phone is on. And I hear every single thing about me. He's talking to someone else about our project, and he's saying so many bad things about us and our family, and so many things that I just had to park. Like, I just went to the side, parked. My heart still beats. I'm still mesmerized. I'm still shocked because this is someone that we trusted. It was like not a family, but it was like a friend that was really close, and we trusted him to go forward with this project. And how Maharaj unfolded, how he did. I mean, on the way back from the satsang, his phone turns on and I hear the whole conversation. It got to a point where I just hung up. I'm like, I've heard enough. It's enough. And then when I canceled the deal, I had to be authentic, and I said, I heard the whole thing, and I just want to say to you, because he turned around and said to me one time that I am God. He said, I'm God. He doesn't believe in anything. And I said, look, I want to say to you that let this be an opportunity for you to realize that there is a God and there is a higher power. Because if you were God, you would have saved yourself from this situation. And it was so mesmerizing, he couldn't talk. So just know Maharaj is there. I'm no one. I'm also a student. Every day I am, and I'm also learning. But just depend on him. I don't mean to tell nobody what to do, but only and only and only depend on him. Seek your answers only from Maharaj. The world will tell you, do it. But if he tells you don't, there is a reason. And just listen to Maharaj. Thank you, Jai Guruji Maharaj. गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी की आई संगत को प्रणाम। थैंक यू गुरुजी। आज फर्स्ट टाइम महाराज की मंदिर में सत्संग में गुरुजी बहुत सत्संग शेयर करवाते हैं, बट आज मंदिर में पहली बार महाराज करवा रहे हैं। आज हैप्पी फादर्स डे है और हम सबके फादर गुरुजी हैं, बट हम सबके फादर्स जो बायोलॉजिकल फादर्स हैं उनकी भी टेक केयर महाराज ही कर रहे हैं, गुरुजी कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले अराउंड 2013 में मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। ही वॉज इन रेलवे, सो ही वॉज इन रेलवे हॉस्पिटल, और ही वॉज टोटल लाइक ऐसा था कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था ही वॉज कम्प्लीटली ऑन डेड बेड। बट एक मेरे पापा की कहीं एक ईगो थी कि आप लोग पापा को छोड़ के, फादर को छोड़ के गुरुजी महाराज करते रहते हो, और हम उनको समझा नहीं पा रहे थे कि पापा हम क्यों गुरुजी महाराज करते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज ही आपका ख्याल रख सकते हैं। बीइंग अ चाइल्ड मैं आपका ख्याल नहीं रख सकती, बीइंग अ मदर मैं अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती, ना मैं अपनी फैमिली का रख सकती हूँ। सिर्फ महाराज जो है, गुरुजी जो है, वही ख्याल रखते हैं। पापा डेड बेड पे थे, पापा वॉज इन हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। मेरे फादर इन लॉ मेरी मम्मा के पास गए, महाराज का स्वरूप दिया और बोला कि सिर्फ आप इनके सराहने के नीचे रख दो और मंत्र जाप करो। मेरे पापा लाइक सजेवा उनका है, तो बोले सजेवा साहब को मत बताना, उन्हें नहीं भी पता चलेगा, इस ओके, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गुरुजी का स्वरूप उनके सराहने के नीचे रख के मंत्र जाप करते रहना है। मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा ने नॉन स्टॉप वहाँ पे अपने मन के अंदर पापा को बिना बताए मंत्र जाप किया, और जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ही कैन नॉट सर्वाइव, और वो हफ्ते के अंदर मेरे पापा हेल एंड हाथी घर आए, और आज हम महाराज के कारण हैप्पी फादर्स डे उनको आज सुबह हम बोल पाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। जय गुरु जी। आज के सत्संग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वेरी हैप्पी फादर्स डे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। हाँ जी सर,